हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्लाउड जिज्ञासु। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेज़ॉन वेब सर्विसेज के सर्टिफिकेशंस की। अमेज़ॉन वेब सर्विसेज के सर्टिफिकेशंस हमारे डिवाइड होते हैं 4 लेवल में। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स, जिसमें से पहला लेवल है हमारा फाउंडेशन लेवल, एंड द सर्टिफिकेट दैट इंक्लूड्स इन इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्लाउड प्रैक्टिशनर। अगर हम बात करें एसोसिएट लेवल की, एसोसिएट लेवल में हमारे 3 सर्टिफिकेशंस होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ योर सोल्यूशन आर्किटेक्ट, सेकंड वन इज़ योर डेवलपर, एंड द थर्ड वन इज़ योर सिस ऑप एडमिनिस्ट्रेटर। फिर हम बढ़ते हैं प्रोफेशनल लेवल सर्टिफिकेशंस की तरफ। ये इंक्लूड करता है 2 सर्टिफिकेट्स। द फर्स्ट वन इज़ योर सोल्यूशन आर्किटेक्ट एंड द सेकंड वन इज़ योर डेवऑप्स इंजीनियर। देन हमारा आता है स्पेशलिटी लेवल। स्पेशलिटी लेवल में टोटल नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स होते हैं 6, and they are also divided in different parts. The first one is your advanced networking, second one is your data analytics, third one is your database, fourth one is your machine learning, then we have security, and the last one is SAP on AWS. अगर हम थोड़ा डिटेल में ब्रीफली देखना चाहें, क्लाउड प्रैक्टिशनर, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर क्लाउड प्रैक्टिशनर, जो कि एक बिगनर लेवल का सर्टिफिकेशन है। सो देयर मस्ट बी अ 6 month ऑफ hands on experience on AWS. This is the basic thing, and the basic understanding of normal IT services, a little bit knowledge about AWS services and the billing section, and the last one but not the least one, basic idea of security concept and use cases. अगर हम बात करें एग्जाम ओवरव्यू की, तो हमारा जो लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन होगा, दैट इज योर गोइंग टू बी द फाउंडेशन लेवल। देन the duration will be 90 minutes, and the cost of the exam will be $100. The format, there must be a 65 questions, and the type of questions can be multiple choice and multiple responses. The delivery method for giving this exam must be the testing center. This is always in common. अगर हम बात करें एसोसिएट लेवल सोल्यूशन आर्किटेक्ट की, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ऑल द एसोसिएट लेवल, जितने भी एसोसिएट लेवल के एग्जाम होंगे, द वन एलिजिबिलिटी इज ऑलवेज कॉमन, दैट इज योर 1 or more year of experience, that is your hands on experience on AWS. Then you must have the knowledge of the compute services, networking, and the storage. Also, if you know about deploying, managing, and operating the workloads, that will be a added on. And the last one is the familiarity with AWS console and command lines interface. अगर हम बात करें एग्जाम ओवरव्यू की, so the level of this exam will be the associate level. The time duration for this exam will be 130 minutes, and the cost for this exam will be $150. Format is again going to be with 65 questions, and the type plus the delivery method, ये दोनों हमारे सेम ही होंगे एज पर द फाउंडेशन लेवल। देन हम मूव करते हैं एसोसिएट लेवल के दूसरे सर्टिफिकेशन पे, दैट इज़ योर डेवलपर एसोसिएट। डेवलपर एसोसिएट के लिए भी, जो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, द फर्स्ट वन इज़ ऑलवेज द कॉमन वन, कि एटलीस्ट हमारे पास 1 or more year ऑफ एक्सपीरियंस, दैट इज़ योर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, यू मस्ट हैव दैट। देन देयर इज़ अ डिफरेंट, in developer associate you need to must have the knowledge about high level programming language, at least one, and then you have to have the ability to apply the cloud native applications, and also have the ability to maintain and debug the code of the modules. अगर हम बात करें एग्जाम ओवरव्यू की, अगेन the level of the exam, the certification will be associate. Time duration, there is a different time duration, no, the time duration will be 130 minutes. Cost again $150. Format will be, there will be same 65 questions. Type plus delivery method will be the same, means आपका जो डिलीवरी पैटर्न है और जो मेथड है वो हमेशा सेम रहेगा इन डेवलपर एसोसिएट एंड द सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। अगर हम बात करें लास्ट एसोसिएट सर्टिफिकेट की, दैट इज योर सिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट। eligibility criteria, the first one is the common one, that you must have 1 year, at least 1 year of experience. अगर आपका 1 साल से ज़्यादा experience है, that will be beneficial. Then you need to know about the deploying and managing workloads, security controls, and the insights of AWS.
अगर हम बात करें एग्जाम ओवरव्यू की, सो द लेवल विल बी एसोसिएट लेवल, टाइम ड्यूरेशन विल बी 180 minutes, and the cost is going to be 150 US dollars. The format is again going to be the same, 65 questions. The type of questions will be multiple choice, and also in this sysop administrator you need to give the lab as well. The delivery method will be same, the testing one. Thank you for watching this video. If you have any question, you can ask me in the comment section. And if you like this video, please do subscribe, comment, and share this video to your friend circle. Thank you so much. Have a nice day. Keep learning.